So three-dimensional difference between three-dimensional geometry. So three-dimensional geometry, before going to learn two-dimensional geometry, let us take. So whenever you take a point here A, the coordinates of the point x comma y means x is nothing but distance from the y-axis. Y x is nothing but. Three-dimensional geometry, you are going to have the it is going to have the x-axis, y-axis, and z-axis. Just the simple thing is that if you imagine that, simple easy way to remember that, in front of you, if there is one room, you have to consider that one room, this room you are taking into consider. ये एक रूम है, इसका बगल में एक रूम है, okay, and that side is one room and that side is one room, and upon this one more floor is there, four rooms are there. You imagine like that. So in two-dimensional geometry, plane will be divided into four parts, and each part is called as a quadrant, which is qua bole to four. Here the x-axis, y-axis, and z-axis will divide the space, not the plane. ये space है, space को 8 parts को divide करें. Each part is called as octet. Octa बोले तो oct, the word is itself is that 8. It is going to divide into the 8 points. So here x-axis, y-axis, and z-axis. X-axis, y-axis, and z-axis. And how the points will be there on x-axis, y-axis, z-axis? First, let us see here. One point whenever you are taking into consider here. You see here, this is one plane, and another plane is intersecting that. So the line, whatever the line we are getting here, and another plane is intersecting these two perpendicularly. Three planes are there. One is horizontal is there. So this, like this, whenever you imagine that, so this is x-axis and y-axis and z-axis. Okay, x-axis, y-axis, and z-axis. Imagination, you need to have the easy way to understand it is that wherever you are present, and the line which is horizontal line, आपका रूम में आपका सामने से दिख रहा है ना, तो you are here, and this line whenever you are considering, this is y-axis you take. This is y-axis. The line which is opposite to you, y-axis, and the line which is left side of you. Suppose this room you are taking into consider. This is x-axis, and the corner you are taking into consider. ये रूम में ये y-axis है, ये this one is x-axis. x-axis इधर ले रहे तो हम लोग उस साइड एक और एक रूम है. You consider that x-axis we are taking here, that side one more room is there. If you take the x-axis this side one room is there. Then the z-axis becomes this corner. Is it clear to you? X, this is y-axis. So imagination, and this is x-axis. If you consider the line in your room, right hand side, and your right hand side one more room is there, and this is z-axis. And you have to imagine the rooms like that, and where are the four rooms are there, and first floor 4 rooms, ground floor 4 rooms, and the first floor 4 rooms. You imagine like that, so that it is an easy task to you to guess the octants, whatever it is given to you. Okay, so this is the one thing you have to do it so that easy. So x-axis, y-axis, z-axis is taken, and it shows to you to show the axis in any way you can consider. Three axes are mutually perpendicular axis, and the intersection point of the three axes is called the origin. So ये देखो, normally already I have shown to you, x will be perpendicular to the y-axis. This is x-axis and y-axis and z-axis. So okay, distances are measured starting from the origin. Origin से start करके measure करें. Okay. Main thing is you need to have the imagination power, so that it's an easy task for you to remember the points for whatever the points are there in the space. You can remember that. You can which type of the points will be there. You can remember. So here this is positive y-axis and this is negative y-axis. Okay. Whenever you are taking the points into consideration, so here the points are mutually perpendicular lines you are taking. This is negative and this is positive. The positive here you take into consider y-axis. This is x-axis is given to you. This is x-axis and this is y-axis, and here it is z-axis.
and the points where the positive points will be there, positive points where you are going to have the, that you need to take into consideration. Yes. Sir, how many victories are I followed? In three-dimensional octants, 8 will be there. Spaces. Yes, 8 spaces will be 8 rooms. You imagine the simple thing is that 8 rooms, cube भी नहीं, cube बोले तो भी means that Rubik's cube बोले तो वो भी confuse हो सकता है, इसमें 3x3 होगा, 2x2 cube Rubik's cube will be there, but so be simple easy way is a house you consider in such a way that the ground floor is having the 4 rooms and first floor is having the 4 rooms. समझ में आ रहा है ना? That is a very easiest way to remember. Ground floor is having the 4 rooms and first floor is having 4 rooms. Consider this one octant. So let us clarify that through the live example. First you see this one, then after I'll explain to you in your surroundings whatever you are having. So x-axis, y-axis, z-axis is taken into consider here. These are the x-axis, y-axis, z-axis. Okay. So if you have octants here, these are the octants here: 5th octant, 6th octant, and 7th octant, and 8th octant. So here you once again, this is first octant. First octant is nothing but normally first floor wala. First floor mein you have to consider here. In the first floor, all the positive points will be there: x positive, y positive, and z positive. X positive, y positive, z positive. So this is the first एक room है. Wherever you are staying, that room you consider as a normally consider as a, all the positive points are there. Okay, so x positive, y positive, z positive. Whenever you consider these points here, this side is the all the positive points, positive, positive, positive is coordinates. So x, y, z coordinates. So that point whenever you take into consider, it is a distance. It is going to have the distance from the x represents that distance from the yz plane. Distance from the yz plane, and y represents the distance from the xz plane. Z represents the distance from the distance of this point from the xy plane. So here, see here, planes to be taken into consider. Z coordinate is shortest distance of the point from xy plane. So what is xy plane? What is xy plane, and what is yz plane? What is xz plane? You need to identify here. See here. This x is the point from yz plane. Yz plane is nothing but here. This is wherever you are having the y-axis, y and z. This is y and this is z. So the plane, whatever it is taking into consider, like this. One plane is there. One plane is you are taking into consider like this. So yz plane. So that plane is called yz plane. You can consider this system also into the consideration like this. If you place your fingers. If you place your fingers, a y-axis, x-axis, and z-axis, if you consider, this is point here, y-axis consider, x-axis and z-axis. Suppose if you are considering in any way, you can. Oh, normally this is x-axis, x-axis, y-axis, z-axis. So y-axis, z-axis, I am saying. This is x-axis. Okay. So x-axis, even you can consider also taking the 3 pens into consideration. 3 pens there. 3 pens को hold करना. Like this. Like this. You hold the 3 pens like this. This is octant, you are going to get it. Holding thoda sa easy way to understand the octants and the points. You hold the 3 pens like this. 3 are mutually perpendicular. So this is y-axis. This is y-axis. This is z-axis. And this is x-axis. Y-axis, z-axis, x-axis. So here see, this side is there. So आपको इधर से आ रहा है. So this is x-axis, positive x-axis. This is positive y-axis. This is positive z-axis. So in this octant is a first octant. ये room है ना, upper वाला room. ये room first octant है. ये second octant, third, fourth, first floor. First floor में क्या है वो 4 octant consider करें. First, second, third, fourth, 4 octants है. First you try to understand. So now here point x comma y comma z is taken here. इधर मैंने point ले लिया. First octant में बीच में इधर भी ले लिया एक point ले.
उसमें x कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम yz प्लेन. XY point. XYZ पॉइंट विल बी एनी पॉइंट, स्पेस है ना, स्पेस में XYZ होगा. तो XYZ इज नथिंग बट यू नीड टू टेक द पॉइंट x इज नथिंग बट YZ प्लेन. YZ प्लेन इज नथिंग बट ये y एक्सिस z एक्सिस है ना. तो ये ऐसा आया ना, ये प्लेन ऊपर से आया ना ये प्लेन. तो दिस इज कंप्लीटली इज कॉल्ड YZ प्लेन. ओके, यू कंसीडर दिस वॉल, ये वॉल YZ प्लेन है. दिस वॉल यू कंसीडर एज अ YZ प्लेन. तो ये पॉइंट इज टेकन हियर, पॉइंट इज टेकन हियर. सो ओके, यही हम लोग कंसीडर करेंगे. दिस इज फर्स्ट, इसके पीछे और एक रूम है, उसको बगल में और एक रूम है, उसके साइड में और एक रूम है. Is it clear to you? So that like that you consider, so that it is an easy task for you to guess. This is what, this room में, ये रूम में ये x axis, पहले बोला है ना, ये फर्स्ट ऑक्टेंट है. इसके नीचे और 4 रूम्स है. फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, यू इमेजिन दिस इज फर्स्ट फ्लोर. तो ये फर्स्ट रूम है, इसके साइड में और एक रूम है. आप किधर खड़े रहते हैं वो रूम को फर्स्ट यू कंसिडर फर्स्ट ऑक्टेंट. Where you are standing, that you consider as a first octave. तो उसका outside, that side one more room is there, that is second octave. Next third octave is उसको side में, and fourth octave is इसको side left side में. Is it clear to you? So now this axis is y axis, ये y axis. तो yz plane क्या होगा, ये y axis है, ये z axis है. तो ये पूरा वॉल है ना, ये वॉल भी आउटसाइड भी जाएगा, वो पूरा YZ प्लेन है. तो लाइक दैट YZ प्लेन इज दिस वन. तो x एक्सिस इज दिस वन. XZ प्लेन इज नथिंग बट XZ प्लेन. ये इधर से आया ना XZ प्लेन, ये XZ प्लेन, XZ प्लेन. ओके, XZ, x axis is this, x axis whatever you are taking, this is x axis. ये x axis है, ये z axis है. सो दोनों का बीच में क्या है, वो YZ XZ प्लेन करना. सो नेक्स्ट XY प्लेन हो गया. XY प्लेन, व्हाट इज XY प्लेन? ये x एक्सिस है, y एक्सिस है. ये फ्लोर होता है ना, ये क्या है, x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. ये फ्लोर है ना, ये फ्लोर इज XY प्लेन, फ्लोर इज XY प्लेन. दिस साइड वॉल इज YZ प्लेन, दिस साइड वॉल इज YZ प्लेन, एंड ये लेफ्ट साइड वॉल है ना, वो XZ प्लेन. तो प्लेन यू इमेजिन इन योर डेली, आप किधर है उधर ही इमेजिन कर लो. 3-dimensional coordinate system is an easy task to understand because 3 dimension है ना, 3-dimensional imagine करना है. So that is not a simple task for you to do it. So like this point, whenever you are taking x point is nothing but ये point है, point is YZ plane से distance. So इधर एक point ले लिया मैंने, उसका x बोले तो what you will do, YZ plane. Where is YZ plane? ये मैं हवा में ले रहा हूँ, एक पॉइंट हवा में ले रहा हूँ, एक हवा में इधर एक पॉइंट ले लिया मैंने. तो ये हवा में इधर पॉइंट है. ये पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, ये x कोऑर्डिनेट चाहिए तो YZ प्लेन. YZ प्लेन किधर है, वॉल YZ प्लेन. तो इधर से एक पॉइंट इधर से, ये डिस्टेंस होता है ना, इधर से ये डिस्टेंस कितना है, उतना डिस्टेंस x कोऑर्डिनेट. y कोऑर्डिनेट XZ प्लेन, XZ प्लेन. सो इधर से वो उधर तक जाओ, डिस्टेंस कितना है, इधर से y कोऑर्डिनेट. नाउ z चाहिए, XY प्लेन बोले तो फ्लोर. इधर से नीचे को जाओ, इधर से नीचे जाओ, XY प्लेन हो गया. तो डिस्टेंस फ्रॉम द x is nothing but distance from the YZ plane, y is nothing but distance from the XZ plane. तो इधर एक पॉइंट लेना है, तो इधर से इधर डिस्टेंस कितना है वो x लिखो, इधर से उधर डिस्टेंस कितना है y लिखो, इधर से नीचे डिस्टेंस कितना है वो z लिखो. यही है. इधर से उस तरफ बोल रहा हूं ना, ये दिखा नहीं सकते ना 2 डायमेंशनल में 3 डायमेंशनल, वो फिगर इसे दिखा है. इधर से लेफ्ट साइड है, तो राइट साइड नीचे है, नीचे की तरफ z. Is it clear to you? This concept is clear to you. So this concept,
थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। From Z to Y is the X. हाँ यस, And distance to the point from Z X axis is Y. एक्सिस नहीं है, प्लेन, Z प्लेन प्लेन बोलना है, प्लेन प्लेन बोले तो हम वाल, ये वाल को देख, वाल से डिस्टेंस है, प्लेन इज नथिंग बट वाल, यू कंसिडर इट एज ए वॉल, सो दैट इज मेन इंपॉर्टेंट। सो एक्स इज नथिंग बट वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन इज दिस वॉल, एक्स जेड प्लेन इज दैट वॉल, एक्स वाई प्लेन इज दिस वॉल, दिस फ्लोर। हमारा फ्लोर के नीचे और एक 4 रूम्स है, समझ में आया ना, ये बात याद रखो, ये किधर आप लोग है, किधर आप लोग है, उस रूम को फर्स्ट ऑक्टेंट कंसिडर करो, इस फर्स्ट ऑक्टेंट से उस तरफ एक रूम है, उस तरफ एक रूम है, वो सेकंड ऑक्टेंट होगा, उस तरफ एक रूम है, थर्ड ऑक्टेंट है, एंड इस तरफ एक रूम है, फोर्थ और एक रूम्स, 4 rooms होगा। So this is the difference between the these things. Now let us see here, this is points. That I will tell you. 5th, below the first quadrant, first octant, 5th होगा, 6th, 7th, 8th. Now you can even points also, 2nd, 3rd, 4th. ये 4th हमारे बगल में है, ये even you cannot imagine that here itself. इसमें थोड़ा सा दिखा दिया तो भी आपको मुश्किल होगा, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लो, ये ऐसा भी ले सकते हैं। यू आर स्टेइंग इन दिस रूम, यू आर स्टेइंग इन दिस रूम, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसका फर्स्ट के नीचे 5, 6, 7 एंड 8। नाउ पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, x प्लस 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 प्लस, इसमें कैसे पॉइंट्स हो, all positive होगा, positive positive positive, because this is positive x, positive axis, x axis, positive y axis, positive z axis। समझ में आया ना, इस रूम में, इसको बगल में रूम है, मींस दैट साइड रूम में, तो इधर पॉइंट्स ले लिया। सेकंड ऑक्टेंट में ये क्या है, x एक्सिस, ये क्या है, नेगेटिव x एक्सिस। इस रूम में क्या क्या है, इस रूम में नेगेटिव x एक्सिस है, पॉजिटिव y एक्सिस है, पॉजिटिव z एक्सिस है ऊपर। तो ऊपर में सिंपल थिंग इज दैट फर्स्ट फ्लोर ऑल आर हैविंग z पॉजिटिव, फर्स्ट फ्लोर में ऑल आर हैविंग z पॉजिटिव, फर्स्ट फ्लोर में फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट, फोर्थ ऑक्टेंट, दीज आर ऑल हैविंग z इज पॉजिटिव, बिकॉज ऊपर में z पॉजिटिव। तो इधर xy है, xy पॉजिटिव है, इसमें x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होगा हमको, क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में ये A है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सुनो देखो, ये फर्स्ट है, इसको सेकंड बना दो, तो ये नेगेटिव x एक्सिस हो गया, नेगेटिव x एक्सिस। So what are the points you are going to have? फर्स्ट ऑक्टेंट में पॉजिटिव 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 होगा, सेकंड ऑक्टेंट में नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, थर्ड ऑक्टेंट में ये देखो, थर्ड ऑक्टेंट इज दिस वन। थर्ड ऑक्टेंट में क्या है, x इज नेगेटिव, y इज आल्सो नेगेटिव। नॉर्मली थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, बहुत नेगेटिव होगा, वो ही मान लो इधर, नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी हियर नेगेटिव पॉजिटिव। अब फोर्थ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, सेम एज इट इज आ जाएगा, ये नेगेटिव्स लेते जाओ, फिफ्थ आ जाएगा, ये सिक्स्थ आ जाएगा, सेवेंथ आ जाएगा, ये एट आ जाएगा। ये देखो प्लस प्लस माइनस होगा, ये माइनस प्लस माइनस होगा, सेवेंथ क्वाड्रेंट में माइनस 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 होगा, ये माइनस चेंज कर रहा हूं मैं। एट में प्लस माइनस माइनस। Even you hold the pens, 3 pens in your hand, the octant system is in your hand। आप किधर है, नहीं है तो आप रूम मान लो, रूम समझ लो, so that it is an easy task। I think is it clear? Those who are online थोड़ा सा तकलीफ होगा, because ये imagination power है, तो ये सीखना है। So